Please start, ma'am. Hello guys, good evening. First of all, I wish you all the very best for today's success. मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी. So let's hope for the best. And अभी आंसर की हम लोगों ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस करके बनाई है. So we will be discussing the most probable answers of this UPSC prelims exam. So let's start our discussion. The first question was, in India, which of the following compiles information on industrial disputes, retrenchments and layoff in functions employing workers? So the answer is Labor Bureau. This one is the answer, Labor Bureau. Shall I speak in Hindi also? आपके लिए भारत में निम्नलिखित में कौन से उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? So it's Shram Bureau. A second question was, in India, which is the role of the coal controller organization? See, this is the question of common sense. अगर आप उस common sense use करते करते आपका वैसे भी हो जाता. The last statement says it ensured that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. आप यहाँ पे देखेंगे तो एंड यूजर्स तो आप कोई भी हो सकता है. एंड यूजर्स तो जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं कोयले से, तो वो भी एंड यूजर्स हुआ. तो कोल माइनिंग कंपनीज घर में नहीं आ सकती हैं. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So the answer will get is A, 1, 2 and 3. Coal Control Organization is the major source of coal status in Government of India. It is true. Second statement is it monitors progress of development of captive coal lignite blocks. It is also true. And the third statement is it hears any objections to the government notification related to acquisition of coal bearing areas. So the answer is A, 1, 2 and 3 statements are right. Let's move to the next question. If a particular area is brought under the fifth schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? So you know, fifth and sixth schedule both are very important. दोनों schedules में से हमेशा questions आते हैं. 90% of the times UPSC asked. So the correct answer will be first. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी. So the first statement is A is right. The second statement is also a probable answer. This would create a local self-governing body in that area, autonomous council and all. So हम ये भी कर सकते हैं, but the main most probable answer is A. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Let's move to the next question. I hope आपके अभी तक सही हो रहे हैं सारे answers. Consider the following statement. The Indian Sanitation Coalition is the platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and World Health Organization. The second statement is, first statement is wrong. It is not funded by WHO and Government of India. The second statement is, the National Institution of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solutions to address the challenges of urban India. Second statement is also wrong. National Institute of Urban Affairs does not come under the Ministry of Housing and Urban Affairs. So the answer is D, neither 1 nor 2. Let's move to the fifth question. This was an easy one. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act 1986? So the correct answer is Central Government Water Authority. अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं जैसे शंकर की आती है एनवायरनमेंट की, तो उसमें भी आप ये इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. एनी बेसिक बुक रिगार्डिंग एनवायरनमेंट उस समय ये कवर होता है. दिस इज नॉट फ्रॉम करंट अफेयर्स, दिस इज फ्रॉम स्टैटिक पार्ट. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the United Nations Credential Committee, this was in news, so UPSC ने इस बारी पूछा है ये. Consider the following statements. First statement says it is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. No, it is not set up by UN Security Council. It is set up by UNGA, United Nations General Assembly. The second statement says it traditionally meets in March, June, and September every year. No, it is also wrong. The third statement says it assesses the credential of all UN members before submitting a report to General Assembly for approval. This is the right answer. So our answer is A, 3 only. Option A and 2 is wrong. Statement 1 and 2 is wrong. Let's move to the next question. Polar code, ध्रुवीय कोड. ये भी इजी था, ये करंट अफेयर्स में था एंड काफी करंट अफेयर्स मैगजीन ने इसको कवर किया था. सो द करेक्ट आंसर इज ए. इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स.
ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। तो दिस वाज एन इजी वन, आई होप आप सब लोगों ने सही किया हो। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। इट इज रिगार्डिंग यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। इट इज ट्रू, अब ये न्यूज में भी था। The second statement is intergovernmental organizations can seek observer status in UN General Assembly. This is also true. Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. So all the three statements are right. So the correct answer will be D, 1, 2 and 3. अगर आप इसको वैसे भी देखें, कोई भी स्टेटमेंट आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको वैसे भी डी ही मार्क कर देना चाहिए था, अगर आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टी बोर्ड, चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Second is it is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. No, this statement is not correct. Third is the tea board's head office is situated in Bangalore. No, the tea board's head office is situated in Kolkata. So third statement is also wrong. Fourth statement is correct. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. So the correct answer will be D, 1 and 4 only. आई होप आपके अभी तक आंसर सही जा रहे हैं। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट, अभी बी पॉजिटिव, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अबाउट ग्रीन वॉशिंग। ये भी न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, आई थिंक ये मार्च में आया था। So the answer is first only, conveying a false impression that a company products are eco-friendly and environmentally sound. It is greenwashing. मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। इट वाज वेरी इजी, मतलब आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्ड इट राइट। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमी, tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. It is very true. अगर tight monetary policy होगी तो capital flight होता है। Second thing, capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. It is also true. आपने अगर ये external commercial borrowings के बारे में पढ़ा होगा तो this was an easy option to guess. Third thing is devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECB. This is also correct. So the correct answer is B, 1, 2 and 3. Let's move to the next one. Consider the following states: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा। इस बार यूपीएससी ने बहुत सही किया है, एलिमिनेशन करने का टाइम ही नहीं दिया। द statements are only one state, only two state, only three states. So it is a very tricky question. अगर आप देखेंगे तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आंध्र प्रदेश नहीं आता है। केरल, हिमाचल एंड त्रिपुरा आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. So only 3 states are correct. Andhra Pradesh is not a correct option. So the option will be C, only 3 states. Let's move to the next question. Consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. No, this statement is itself wrong. ये credit rating agencies से RBI का कोई लेना देना नहीं है. Credit rating agencies are regulated by SEBI. द सेकेंड स्टेटमेंट, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत आपको एलिमिनेट कर देते तो यू विल गेट द आंसर इज बी। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड थर्ड थिंग इज ब्रिकवर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस इज आल्सो राइट। सो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2 and 3। इट इज रेगुलेटेड बाय SEBI, नॉट RBI। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक बोर्ड ब्यूरो, which of the following statements are correct? So first statement is the governor of RBI is the chairman of Bank Board Bureau. It is not necessarily, because अभी का जो governor of RBI है वो chairman नहीं है Bank Board Bureau के. So first statement is wrong and we will get our answer. The answer is B, 2 and 3 only. Still we'll see the remaining statements. The second statement is Bank Board Bureau recommends for the selection of heads for public sector bank. It is true. And Bank Board Bureau help the public sector bank in developing strategies and capital raising plans. It is also true. So our answer will be B, 2 and 3 only. Let's move to the next one. With reference to convertible bonds, consider the following statements. परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. So the first statement is, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. It is true. अगर आपको ऑप्शन आता है चेंज करने, एक्सचेंज करने का, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज वेरी ट्रू.
The second thing is the option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. I'll tell you in Hindi, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों को इंडेक्शन की मात्रा प्रदान करता है. It is also true. So the correct answer will be our C, both 1 and 2 only, both 1 and 2. Let's move to the next statement. This was an easy one. India is a member of all three of these organizations. India ही मेंबर है, एशियन AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो तीनों का ही मेंबर है इंडिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, 1, 2 and 3. गाइस अभी तक आपके कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए, प्लीज लेट मी नो. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. It is true. Vietnam अभी बहुत ही जल्दी से बढ़ रहा है. It is one of the fastest growing economies. It is very true. Second statement is Vietnam is led by a multi-party political system. No, Vietnam is not led by a multi-party political system. Second statement is wrong. So if we eliminate our option A and option D are eliminated. So let's see the remaining options. Vietnam economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. It is true. अगर आप किसी भी कंट्री का ग्रोथ देखेंगे तो एक्सपोर्ट पे काफी हद तक डिपेंडेंट होता है, तो इट इज कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट, तो ये आप ऐसे ही करेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज for a long time Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. It is also true. अगर आपकी लो लेबर कॉस्ट होगी और आपके एक्सचेंज रेट स्टेबल होंगे तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड से ग्लोबल कंपनीज आपके यहाँ पे आ सकती हैं, सो वो भी आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. नो, वियतनाम का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव बट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. सो द वी विल गेट आवर आंसर. द आंसर विल बी सी, 1, 3 and 4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? We all know it's the RBI, open market operation करता है, reverse repo rate and all. जितने भी easy money policy, tight money policy सब RBI करता है. So this was an easy question. Inflation को control सिर्फ RBI करता है. So we can do this with RBI. The answer will be D, Reserve Bank of India. Let's move to the next question. It's about नॉन फंजिबल टोकन. बहुत न्यूज में थे पिछले साल, मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड इज दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन. वेरी ट्रू, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये सब टोकन्स बनाए गए हैं. एंड थर्ड इज दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. नो, हर एनएफटी का प्राइस अलग होता है, तो वो एक इक्विवेलेंसी के उस पे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते. लाइक एक 10 रुपए का नोट है तो वो हर जगह 10 रुपए का ही रहेगा, बट हर एनएफटी का अलग अलग प्राइस होता है. तो द थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, 1 and 2 only. So we'll move to the next question. This was a tough one. Reservoirs in the states: Ghat Prabha, Telangana; Gandhi Sagar, Madhya Pradesh; Indira Sagar, Andhra Pradesh; and Marathon, Chhattisgarh. सो आप इसके मतलब इसमें पूछे कि हाउ मेनी पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें हम लोग को ये बताना है कि कितने पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं है. इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है. दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, इसलिए काफी लोग का ये गलत हुआ है. अगर आपका भी हुआ है तो नथिंग टू वरी. सो द आंसर इज सी. only three pairs are not correct. So only one pair was correct, and it was Gandhi Sagar, that is in Madhya Pradesh. It was only correct. Ghat Prabha is in Karnataka. It was wrong. Indra Sagar was in Madhya Pradesh. It is also wrong. And Marathon is also in Jharkhand. So it is also wrong. Only one statement is correct. Gandhi Sagar, Madhya Pradesh. So only 3 pairs are wrong in our statements. We'll get the answer. The answer will be C. Let's move to the next question. इसके लिए काफी ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए. The question was really tough. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. This is wrong. अगर ये मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं सोलर रेडिएशन हाई क्लाउड्स. Second is low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. This is also wrong. Neither 1 and 2. Both the statements are wrong. Let's move to the next question. BDBD.
BDBD was in news. It's a large refugee settlement in northwest Uganda. It's in Uganda, not in Kenya. So first statement we get is wrong. उससे हम अपना first option we can eliminate. Second is some people who fled from South Sudan, civil war lived in BDBD. This is true. And third statement is some people who fled from civil war in Somalia lived in Dadaab refugee complex in Kenya. It is also true. Dadaab is in Kenya, but BDBD is in Uganda. So the correct answer will be C, 2 and 3 only. Mapping is very important, guys. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, mapping is always important for UPSC prelims, means and interview as well. Let's move to the next question. See, this is also from mapping. Which one of the following are the members of the Organization of Turkic States? So only two nations in these statements are correct, Azerbaijan and Uzbekistan. ये दोनों ही तुर्की राज्य हैं, बाकी सब तुर्की राज्य नहीं है. So this was a little tough question, a medium-based question. Armenia, Croatia, Romania are not the Turkish nation. Azerbaijan and Uzbekistan, ये दोनों ही तुर्की राज्य हैं. So we'll get our answer. It is C, 2 and 5 only. Let's move to 24th question. Gujarat has the highest solar park in India. No, the statement is wrong. Rajasthan has the largest solar park in India. So first statement we get is wrong. इससे हमारा A and C statement गलत हो जाता है. We'll leave by 2 and 3. Kerala has a fully solar powered international airport. This is true. And Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. It is wrong. It is Madhya Pradesh. So हमारा बचता है only 2 statement. Second statement is correct. So my answer will be B, 2 only. This was also easy question. अगर आपको थोड़ा आप इसमें renewable energies पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारे statements थे. And this Kerala was in current affairs news, the airport thing. Let's move to the next question. With reference to the United Nations Convention of Law of the Sea, consider the following statement. ये हम इसको मतलब unclose भी बोलते हैं, but I'll tell you the full form only. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baseline, determined in accordance with the convention. It is also correct. 12 nautical miles तक ही होता है. It is a very true statement. Let's move to the next statement. Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. It is also true. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles. This is also true. So all the statements are right. Correct answer will be D, 1, 2 and 3. आपको थोड़ा इसमें डीप नॉलेज चाहिए थी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए और नॉटिकल माइंस कितना होना चाहिए, बट फिर भी ये क्वेश्चन डुएबल था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements best reflect the issue with Senkaku Island? Senkaku Island was very much in news, तो आपको ये पता होना चाहिए. The correct answer is B, China and Japan. ये मतलब ईस्ट चाइना सी में है सेनकाकू आइलैंड एंड दिस वाज वेरी मच इन न्यूज और अभी से नहीं, अराउंड 2-3 इयर्स से काफी न्यूज में है. सो इस पे क्वेश्चन मतलब ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, वो जो पूरा एरिया है उस पे काफी क्वेश्चंस प्रोबेबल होते हैं. तो दिस वाज एन इजी वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी वैसे वाला है, इसमें यू कैन नॉट एलिमिनेट ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, सो दिस वाज आल्सो टफ. सो लेट्स सी. The first statement is Chad setting up the permanent military base by China. See, this was wrong. Recently, China set up its permanent military base at Djibouti, not at Chad. So, first statement is wrong. We're left with these 3 statements. Guinea, a suspension of constitution and government by military. This statement is right. Third, Lebanon, severe and prolonged economic depression. ये भी statement सही है. लास्ट वन इज टूनिशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट. ये तो रिसेंटली हुआ था, ये भी सही है. सो 3 पेयर्स आर करेक्ट. एंड चैड जो नहीं है, चाइना का जो परमानेंट सेटलमेंट है वो जिबूती में है मिलिट्री का, ये उसमें नहीं है चैड में. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ओनली 3 पेयर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रीजन ऑफर मेंशन इन न्यूज. आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स और मैपिंग से कितना कुछ आ रहा है. सो अगर आपको प्लीज ये स्ट्रॉन्ग करना है, The one thing is Anatolia is in Turkey. ये important है. ये पहले भी UPSC Anatolia Plateau पूछ चुका है. अगर आप previous year में देखेंगे तो it has been asked already. So it is our correct option. Anatolia is in Turkey. Amhara is in Ethiopia. This is also correct. Cabo Delgado is in Mozambique. It is not correct. So third statement is wrong. And Catalonia is in Spain. So fourth statement is also wrong. So only 2 pairs are correct. Anatolia and Amhara. Or correct answer will be B, only 2 pairs.
Let's move to the next question. Which refers to the Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. Wild animals are sole property of the government. This is true. When a wild animal is declared or protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected areas or outside. बिल्कुल सही है. A wild animal है, चाहे वो कहीं पे भी पाया जाए तो equal protection मिलेगा. This statement is also correct. Let's move to the next statement. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. No, सिर्फ यही एक ग्राउंड काफी नहीं है, बाकी भी बहुत सारे ग्राउंड होने चाहिए तभी हम उसको मार सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस के हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट यू कैन एलिमिनेट. सो द आंसर विल बी ए 1 and 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जाने जाती हैं? कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी, इट्स एंट चीटी. चीटी इज वेल नोन फॉर एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंगी. दिस इज इन ल्यूसेंट. ये फैक्ट अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा. द आंसर इज ए, चीटी. Let's move to the next question, 31st. In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subject? See guys, ये जो historical background के questions है, ये हमेशा से important रहे हैं. अब UPSC कहीं ना कहीं कैसे भी करके ये पूछता है, whether it is 1853 का act or 1833 or whether it is 1909 or 1919, 1935, हमेशा कोई ना कोई question आता ही है. So let's see the options here. First is administration of justice. It is true. It was a reserved subject. Second is local self-government. This was not true. Local self-government cannot be a reserved subject. So if we eliminate option 2, we'll get our answer. The answer will be C, 1, 3 and 4. Land revenue and police were also reserved subjects. Let's move to the next question. In medieval India, the term fanam referred to. Fanam was a coin. It was a coin related to South India, Travancore. Travancore में ये coin चलता था and the coin term was termed as fanam. So the correct answer will be B, coins. It was a tough one. ये NCERT में शायद मेंशन नहीं है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है इस चीज के लिए. अगर आपका गलत भी हो गया है तो डोंट वरी, काफी लोग का गलत हुआ है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following consider the following freedom fighters? इसमें से कौन कौन से गदर पार्टी से एसोसिएटेड है, ये पूछा है क्वेश्चन में. दिस वाज इजी. गदर पार्टी को पे ऑलरेडी 2-3 लोगों बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुके हैं क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज 3. ओनली रास बिहारी बोस वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी. बरेंद्र कुमार घोष एंड जेसी चैटर्जी, ये दोनों के दोनों गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे. सो आवर आंसर विल बी डी, 3 ओनली. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डुएबल था. अगर आप थोड़ा इसको गदर पार्टी को अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होते तो आपके लिए डुएबल आंसर क्वेश्चन था. दिस वाज नॉट अ टफ वन. कोई नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the proposal of CRISP mission, see again and again UPSC is asking about these missions. These are very important. Let's see the options. The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as the princely states. No, this is wrong. The first statement is wrong. Let's move to the second statement. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. This is right. So answer will be B, 2 only. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था एंड ये डुएबल भी था. दिस वाज नॉट अ टफ वन. तो अगर आपका गलत हुआ है तो आगे थोड़ा और मेहनत की जरूरत है, बिकॉज इट वाज अ डुएबल क्वेश्चन एंड एक क्रिस्प मिशन, अगस्त ऑफर एंड कैबिनेट मिशन, एनसीएम, सीडीएम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू रॉन्ग इन दीज क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th. With reference to Indian history, consider the following text. नेति प्रकारण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शकता एंड त्रिशता महापुराण. इनमें से कौन कौन से जैन टेक्स्ट है? See, this was a tough question, but आपका डुएबल है, बिकॉज मैं तो जैन हूँ, मुझे पता है, बट अगर जो जैन नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ है. So the 2 and 4 are Jain text, परिशिष्ट पर्वना and the 4th one. These are Jain texts and remaining 2 are Buddhist. नेति प्रकरणा and अवदान शकता is our Buddhist text, and 2nd and 4th are Jain text. So answer will be B, 2 and 4 only. Let's move to the 36th question. इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जानेगा ये बताना है. आर्यदेव जैन विद्वान, दिग्नाथ बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान. आर्यदेव जैन विद्वान नहीं थे, आर्यदेव जो थे वो बौद्ध विद्वान ही थे. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सो एंड सेकंड इज दिग्नाथ बौद्ध विद्वान, ये सही थे. दिग्नाथ वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर
and Nathmuni was a Vaishnavite scholar. So the state 2 and 3 pair are correct. So two on केवल दो युगम. Statement C is right. Only two pairs are correct. Aryadev was a Buddhist, not a Jain scholar. ये थोड़ा टफ था, ये तीनों के तीनों जो मतलब पर्सनालिटी है जनरली न्यूज में या कहीं पे नहीं आता है, इसके लिए काफी डीप नॉलेज चाहिए. ये टफ था, अगर आपका गलत भी हो गया है सो इट्स ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ. नो, दिस इज रॉन्ग. भारत पर पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. विल लेफ्ट विद बी एंड डी ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया. ये सही है. फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट इज मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था. नो, दिस इज रॉन्ग. वो नहीं हारे थे अस्थायी रूप से. सो द ओनली second statement is correct. So we'll get an answer. The answer is B, कि only two. So the next question. This was a tough one. कुल्हा दरान सैयद्स को बोलते थे. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दरान कहलाते थे. So the statement D is correct. सैयद डायनेस्टी, सैयद को कुल्हा दरान कहते थे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों. सी यहीं पे आज ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. गजपति रूलर्स वर इन 15th century एंड डच केम इन इंडिया इन लाइक अर्ली 17th century. तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है आपस में. So for the first statement will be wrong. The second and third statement is right. अल्फोंसो द उलबैक ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द नेक्स्ट इज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी. दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. अगर आप क्रोनोलॉजी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था. सो द करेक्ट आंसर इज बी, केवल 2 and 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है. ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. लेट मी रीड इट देम फॉर यू. न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास नहीं हो सकता. दिस इज वेरी ट्रू. अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी करेंगे ना, कि कोई एक डिप्लोमैट, कोई एक जो एक नैतिक राजा, जो एक मोरल किंग होगा, वो कैसे सोचेगा, तो भी आप इसको कर देते. सेकेंड स्टेटमेंट इज स्त्री दास अपने मालिक के ससंग के रूप पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मौलिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है. सॉरी फॉर माई हिंदी, बट इट इज ऑल्सो ट्रू. ऑल these statements are true. So the correct answer we get is D, 1, 2 and 3. Let's move to the next one. Site of Ashoka's major rock edicts and location. सी इसमें दो गलत है, दो सही है. धौली इज इन उड़ीसा. इट इज ट्रू. जोगाड़ा इज इन उड़ीसा एंड कलसी इज इन उत्तराखंड. So option statement third and fourth are wrong and 1 and 2 are right. So we'll get with only two pairs are correct. Dholi is in Odisha and Eragud is in Andhra Pradesh. These two statements are correct. Third is Jogada is in Odisha only and Kalsi is in Uttarakhand. So we'll get our answer, that is B, only two pairs. Let's go to the next one. नानुका चांदेला, ये हमको किंग और डायनेस्टी मैच करनी है. नानुका चंदेला, जया शक्ति परमार, नागभट्टा गुर्जर प्रतिहार एंड भोजा राष्ट्रकूट. सी भोजा वाज अ परमार किंग. So this is wrong. Fourth statement is wrong. Nagabhatta is correct. Gujar Pratihar. Jaya Shakti was also a Chandela king and Nanaku was a Chandela king. So statement 2 and statement 4 are wrong. So we'll get our answer, only two pairs are correct. That is B. Let's go to the next one. So the following statements about Sangam literature is in ancient South India is great. So Sangam literature में वर्णा system को mention किया गया है. So here we will get the answer. The answer is B. The social classification of Varna was known to Sangam poets. वहाँ पे वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण था संगम कवियों में. So we'll get our answer is B, that it is mentioned in NCERT. You can easily get this question. if NCERT में specifically mention है this Varna system in Sangam dynasty. ये वहाँ पे है. तो this was an easy guess. The answer is B. Let's move to the next one. योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के टाइम पे.
So the correct answer is A, Akbar. It was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar. So answer is A only. It was an easy one, and I think it is also mentioned in NCRT. Let's move to the next question. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which of the one of following statements correctly represent the teaching of Ramanuja? Ramanuja is very much was in news. सारे ही करंट अफेयर्स मैगजीन ने इसको कवर किया था, तो आपको पता होना चाहिए. वह न्यूज़पेपर्स में भी काफी आया था. So the correct answer is A. The best means of salvation was devotion. It is a correct answer. ये रामानुजा की जो philosophy है इसको best explain करता है. मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति ही है. Let's go to the next one. We'll get to 46th question. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veerawal. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? A very famous temple. इस पे कितने सारे आक्रमण भी हुए हैं. Let's see. Somnath Temple is one of the Jyotirling shrine. It is true. ये एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है. ये बिल्कुल सही है. Second is a description of Somnath Temple was given by Al-Birni. ये भी बिल्कुल सही है. Al-Birni ने description दिया था. The third one is प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ का प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन ने किया है. ये गलत है. जो प्राण प्रतिष्ठा है सोमनाथ मंदिर की, ये पहले हमारे राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने किया था. So third statement is wrong. So we left with only two statements. The correct answer will be A, 1 and 2 only. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये अभी मैं सोमनाथ टेम्पल विजिट भी की थी, तो उसमें यहाँ पे बड़ा अच्छे से बनाया हुआ था. उसको नाम भी था प्रेसिडेंट का, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in human body? See, B cells and T cells were very much in news statements. ये easy था. They protect the body from the diseases caused by pathogens. So the option D is correct. Let's move to the next one. Consider the following statements. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. How it is possible? Nanoparticles exist everywhere. So statement 1 is wrong. So we're left with option only B and D. Let's move to the second statement. Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. It is true. The third statement is nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. ये भी बिल्कुल सही है. So the correct answer is D, 2 and 3. Now the next one, DNA barcoding. DNA barcoding access the age of a plant or animal. See, इसका कोई reference नहीं मिल रहा हमको कहीं भी कि ये access कर सकता है कि नहीं. So first statement is wrong, and other two statements are right. Distinguish among species that look alike and identify undesirable animal or plant material in processed food. This second and third statement is correct. So the correct answer will be D, 2 and 3. First statement इसका कहीं reference है नहीं कि ये age को आयु का आकलन कर सकता है कि नहीं. So first statement is wrong. Let's move to the next thing. Consider the following: carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. So the question is, excess of which of the following in the environment causes acid rain? Acid rain is a very simple question. ये पहले भी UPSC पूछ चुकी है acid rain के बारे में. So the correct answer will be B, nitrogen oxide and sulfur dioxide. ये दो ही acid rain प्रोड्यूस करते हैं. So the correct answer will be B, 2 and 4 only. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन का कोई रोल नहीं होता है एसिड रेन में. So this was an easy guess. So answer is B, 2 and 4. It was the next one. Rapid financing instrument and rapid credit facility. ये किससे रिलेटेड है? ये करंट अफेयर्स में था गाइस. So the answer is IMF, International Monetary Fund. These two instruments, ये बहुत जल्दी क्रेडिट लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है IMF. So this was an easy one, rapid financing instrument. So answer is B, International Monetary Fund. Let's move to the next question. With reference to Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. This is true. अगर आपका बढ़ता है नीर NER तो appreciation होता है रुपये का. This statement is true. Second is an increase in the real exchange rate. It's RER indicates an improvement in trade competitiveness. It does not indicate an improvement. अगर increase होता है RER तो इसका मतलब आपके imports जो हैं वो expensive हो रहे हैं. So the statement second is wrong. Third is an increasing trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and need. This is true. अगर ऐसा होता है तो ये लिटरली डाइवर्जेंस को इंक्रीज करता है नीड और RER में.
सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा रीड के बारे में तो आपको ये आंसर आ जाता कि अगर RER बढ़ता है तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ता, बल्कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज C, 1 and 3 ओनली। Let's move to the next one. Indian economic के regarding ये question है. The first one is, if the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. See, the statement is wrong. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्फ्लेशन है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा है, तो आरबीआई और खरीदेगी नहीं, उल्टा आरबीआई बेचेगी। आरबीआई जो है वो मार्केट में से जो मनी है, मनी लिक्विडिटी है, वो एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा, ना कि बाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर हम पहले एलिमिनेट कर देते तो विल गेट आवर आंसर। द करेक्ट आंसर इज B, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। दिस इज ट्रू. And if interest rate in the USA or European Union were to fall, there is likely to induce RBI to buy dollars. This is also true. Only statement 1 is wrong. So the answer is B, 2 and 3 only. Let's move to the next one. G20 Common Framework. Consider the following statements. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. It is true. It is an initiative to support low-income countries and sustainable debt. This is also true. This was in current affairs. Nothing to explain here. Both the statements are right. So the correct answer is C, both 1 and 2. Let's move to the next question. Inflation indexed bonds. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, सपोज आपने 100 रुपए का कोई बॉन्ड खरीदा, इन्फ्लेशन आ गया 4%, तो वो बॉन्ड हो गया 104 रुपए का, तो जब आप उसको बेचेंगे तो आपको 104 रुपए ही मिलेंगे। दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मतलब इन्फ्लेशन से जो एडजस्ट करके बॉन्ड होता है, दैट इज IIB। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स हियर. Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIB. This is our option correct. This statement is correct. The second statement is IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. अभी मैंने समझाया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। नो, ये अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है, ये जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा IIB पे या जो भी गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। सो द ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग एंड ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। So the correct we'll get our answer is A, 1 and 2 only. Let's move to the next one. With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? जैसे Amazon है, इस तरह की जो ये foreign owned e-commerce firms हैं, इनके बारे में क्वेश्चन है। Let's see the statement. First statement is they can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. नहीं, वो अपने सामान नहीं बेच सकते। ये अभी 2019 में ही अमेंड हुआ है। इसमें बोला गया है कि जैसे जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं, वो उनके जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे वो अपना सामान नहीं बेच सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस वाज अमेंडेड इन 2019. Second is the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. This statement is right. जितना भी है तो वो लिमिट कर सकते हैं। So their correct answer is B, 2 only. First statement is wrong. It was amended in 2019. Let's move to the next question, 57th. So the following activities constitute real sector in the economy. See, what is the real sector? Real sector मतलब जो वास्तविक क्षेत्र होता है, जहां आप देख सकते हैं चीजें। तो फर्स्ट आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, आप समझिएगा। फर्स्ट इसमें फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, जो किसान अपनी फसल काटेंगे तो जो फसल कटेगी वो फिजिकल फॉर्म में होगी ना, तो आप उसको इजिली देख सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास से कपड़े को बदलना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल थिंग, रियल थिंग है, आप इसको भी देख सकते हो अपनी आंखों से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज a commercial bank lending money to a trading company. See, this is also, you cannot see, this is not a real thing. So ये गलत है। Fourth statement is also wrong. A corporate body issuing rupees denominated bond overseas. So the real sector only is 1 and 2 statement. Farmers harvesting their crops and textile mills converting raw cotton into fabrics. So we'll get an answer that is A, 1 and 2 only. Next one to the 58th question. It is regarding indirect transfers. कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर में कौन से स्टेटमेंट सही उसको एक्सप्लेन करती है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज डी इज एक्सप्लेन्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर, दैट इज अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स derive their substantial value from assets located in India. So this was the indirect transfer. I'll read in Hindi also. कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। So the statement is D. It is was a simple definition. If you have read about indirect transfer, you could have answered it.
So the correct answer is D. Let's move to the 59th question. It is regarding with reference to the expenditure made by an organization of a company. Which one of the following statements are correct? First is acquiring new technology is the capital expenditure. Obviously, any technology is an asset. So capital जो भी आपका expenditure होता है वो asset पे होता है. So technology is always a asset. So first statement is right, and second is debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. No, जितने भी ये इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग है सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विल गेट एन आंसर दैट इज ए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 60th, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Second is dated security issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. It is also true. These two statements are from NCERT only. That's why I always say to you that NCERT is very important. So the answer is C, both 1 and 2. I think these are from 12th class NCERT. Very simple question. अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी तो it's very tough, आपको समझ नहीं आएगा. Answer is C, both 1 and 2. Let's move to the next question. Among the following crops, which one of the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? किससे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है? सो इट इज राइस. चावल को बोने से उसमें आपका मीथेन भी रिलीज होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज होता है. सो दिस वाज एन इजी वन. द आंसर इज राइस, धान. This was the 62nd question. System of rice intensification of cultivation is in which alternate wetting and drying of rice field is practiced results in. The statement is reduced seed requirement, reduced methane production and reduced electricity consumption. See, जब भी कोई नया सिस्टम आता है ना, वो हमेशा एक प्रोग्रेस होती है, तो उसमें हमेशा हम एक पॉजिटिव चीजें देखते हैं. ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं. इसमें हमारा सीड की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, मीथेन की प्रोडक्शन भी कम हो रही है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो रहा है. तो बोथ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो उसको मतलब हमें उसके फायदे देखने हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने हैं. एंड ऑल थ्री आर द पॉजिटिव impacts of this science system of rice intensification. So we'll get an answer that is D, 1, 2 and 3. So the next question, it was from the mapping and current affairs. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? It is Lake Fagbun. This is option B. Lake Fagbun has become dry. ये 1980s से dry हो रही है. This lake is in Mali और अभी ये एकदम डेजर्ट हो गई है. So this was in the news. इसको अभी वापस इसको हील करने की बात चल रही थी. So this was in the news, Lake Fagbun, and it is in West Africa. The correct answer is B. Let's move to the next question. Gandikota Canyon of South India was created by which of the following rivers? It is Pennar. It was in news, and if you do mapping religiously, आपको वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि गांडीकोटा कैनियन का कावेरी, मंजीरा और तुंगभद्रा से नहीं कोई रिलेशन है. गांडीकोटा कैनियन जो है वो पेन्नार रिवर से ही क्रिएट हुआ है. तो द आंसर इज सी. इट वाज अ सिंपल वन अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है तो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमको पीक एंड माउंटेन्स बताना. सो द थिंग इज नामचा बरवा गढ़वाल हिमालयस, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयस एंड नोकरेक सिक्किम हिमालयस. सी, नोकरेक सिक्किम हिमालय में तो हो ही नहीं सकता. नोकरेक जो है वो मेघालय में है. तो अगर आप नोकरेक नेशनल पार्क भी सोचेंगे तो वही मेघालय में है. तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग and statement 1 is also wrong. Namcha Barwad, it is in Arunachal Pradesh, easternmost side of India, and Garhwal Himalayas are in like Himachal and this Himachal side, Uttarakhand side. So the correct answer is B only, Nanda Devi. Nanda Devi is in Kumaon Himalayas. Option statement A and statement third is wrong. So we'll get an answer that is B, 2 only. Let's move to the next question. Levant. Levant was in news and that is a region along the eastern Mediterranean shores. This was in news और जिसने भी geography भी पढ़ी है, even GC Leong में भी ये mention है Levant region. So the answer is A only, region along the eastern Mediterranean shores. अगर आपका सही गया तो बहुत सही है, कोई नहीं, बड़ी काफी बच्चों का गलत भी हुआ है. So nothing to worry guys. Let's move to the 67th question. See, this one was also from mapping. इस बारी mapping से minimum 6 to 7 questions पूछे गए हैं. Mapping आपको हर जगह help करती है, so you should be very good in it. Let's see. Which one of the following countries have borders with Afghanistan? अफगानिस्तान से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर मिलता है? अजरबैजान तो बहुत दूर है अफगानिस्तान से, इसका तो वैसे ही नहीं मिलता. अगर आप ये वाली स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं फर्स्ट वाली, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, 3, 4 and 5.
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan have border with Afghanistan, not Azerbaijan and Kyrgyzstan. So ये सिंपल मैपिंग का क्वेश्चन है, ये काफी लोग का सही हुआ है. अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो आपको समझ में आ जाता कि अफगानिस्तान, और आप थोड़ा इमेजिन करते हो उसका लोकेशन, तो भी यू कुड हैव गेट द आंसर इज सी 3, 4 and 5. Let's move to the next question. With reference to the India, consider the following statement. See, this statement is from common sense. अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे. Let's see how. The first statement is monazite is a source of rare earths. It is true. ये बिल्कुल सही है. Monazite contains thorium. ये भी बिल्कुल सही है. केरला में मिलता है वहाँ के सैंड में. Third statement is monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sand. Entire coastal sand में तो मिल ही नहीं सकता है. इतना ही वो होता है, ये abundant होता है, तो इसके बारे में इतनी बात ही नहीं होती. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर आप थर्ड स्टेटमेंट जहाँ पे रॉन्ग करते हो तो आपको आंसर आ जाएगा दैट इज बी 1, 2 and 4 ओनली. इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट. ये बिल्कुल सही है. अभी प्राइवेट बॉडीज को नहीं अथॉरिटी है. तो अगर आपको पता है कि एंटायर इंडिया के कोस्टल सैंड में मिलने लगा तो नहीं पॉसिबल है. तो ये आंसर बहुत कॉमन सेंस वाला था. अगर आपको नहीं पढ़ा था मोनाजाइट के बारे में तो भी यू कुड हैव गेट टू द आंसर दैट इज बी 1, 2 and 4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in. सबसे बड़ा दिन होता है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, दैट इज 21st जून. समर सॉलिस्टिस जिसको बोलता है. तो दिस वाज अ वेरी इजी वन. द आंसर इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून. इन द नॉर्दर्न इट्स बी 21st जून, सेकेंड हाफ ऑफ द जून. इट वाज एन इजी वन. सबसे बड़ा दिन पूछा है, कुछ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी थी, तो क्वेश्चन इज इजी. Let's move to the 70th question. Wetland and location. See, another question from mapping. Let's see the answers. Hokera wetland is in J&K, not in Punjab. So first statement is wrong. Renuka wetland is in Himachal Pradesh. It is true. Rudrasagar is in Tripura. It is also true. And this is Shasta Makota Lake is in Kerala. It is not in Tamil Nadu. So we left with 2 pairs. So answer is B. Only 2 pairs are correct. Hokera is in J&K and Rudrasagar is in Tripura, Renuka is in Himachal, and Shastmakota is in Kerala. So that will get the answer, that is B. To the 71st question. It is a little tough question, but if you get it, I'll tell you how you could have solved it by common sense. See, the first statement is pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the contempt of court acts 1971 passed. This was true. Second is the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt for themselves. This was also true. So first and second statements are true. Let's see the third one. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. See, this was the catch here. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिफाइन नहीं करता है. यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है वो डिफाइन करता है सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग and statement fourth is correct. In India, the parliament is vested with the power to make laws and contempt of court. So the answer is B 1, 2 and 4. Statement third is wrong. Constitution of India define नहीं करता है, define करता है contempt of court at 1971. So the answer is B 1, 2 and 4. Let's move to the 72nd question. With reference to India, consider the following statement. Government law officer and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognized as advocates. This is true. ये पहला statement एकदम सही है. Second is Bar Council have the power to lay down the rules related to legal education and recognition of law colleges. ये भी आंसर एकदम सही है. So both the statements are correct and the answer is C, both 1 and 2. इसमें आपको थोड़ा deep knowledge चाहिए थी ये आंसर सॉल्व करने के लिए. अगर आपका गलत भी हुआ है so nothing to worry. Let's move to the next question. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. नहीं, ये गलत है. ये बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पास करा जा रहा है तो इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं जरूरत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर आपको पहली स्टेटमेंट पता है गलत है तो आपका आंसर आ जाता है दैट इज बी बाय एलिमिनेशन मेथड. दैट इज बी 2 and 3 ओनली. फिर भी let's read the other 2 statements. When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his assent. बिल्कुल सही है, वो मना नहीं कर सकते हम president. And third is a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha. ये भी एकदम सही है. And there is no provision of joint sitting. ये भी बिल्कुल सही है. joint sitting का कोई provision नहीं है ना इसमें ना money bill में. So the correct answer is B 2 and 3 only. Let's move to the next question of polity. The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks. Cabinet minister, minister of state, और ये गलत है. These are the 3 ranks में है.
कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ये विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड ये अलग अलग नहीं है. दिस इज ओनली वन कैटेगरी. सो द थ्री कैटेगरीज आर cabinet minister, minister of state and deputy minister. The second statement is the total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total member of Lok Sabha. ये बिल्कुल सही है. ये 91st amendment से लाया गया था ये provision. So second statement is correct. So the answer is B, 2 only. Let's move to the next question. ये कौन कौन से exclusive powers हैं लोक सभा की? सी लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर वहां होगी जहां पे स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अगर स्टेट पे जहां इफेक्ट आएगा वहां राज्यसभा आ जाएगा. तो अगर आप इस थॉट से भी देखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाता. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इसमें ये लोकसभा की, क्योंकि इमरजेंसी का पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है, सब स्टेट्स पे इसका इफेक्ट आएगा. सो द आंसर स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग. सेकंड इज टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये आप ऐसे भी देख लेते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होते, तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव पावर होगी. एंड थर्ड इज टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इम्पीचमेंट में भी राज्यसभा का पावर होता है. द करेक्ट आंसर इज बी. दिस वाज एन इजी वन एंड लक्ष्मीकांत में तीनों ही बहुत अच्छे से मेंशन है, बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है. तो द करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अटॉर्नी जनरल के बारे में है ये. इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, फिर भी आई रीड it to you. Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. नहीं, ऐसा नहीं है. आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है CAG, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. Second is, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. See, the statement is correct, but it is not according to the Constitution of India. It is a convention कि Attorney General जब resign करता है तो गवर्नमेंट रिजाइन करती है, बट ये कन्वेंशन है. दिस इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज डी. Let's move to the next question. With reference to the anti-defection law in India, consider the following statement. First, the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. This is wrong. कोई भी जो nominated member है वो 6 months में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, बट कोई भी इंडिविजुअल जो मेंबर होता है वो करेगा तो वो एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. Second is correct. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. ये बिल्कुल सही है. इवन ये एक लूपहोल भी है इसका कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं मेंशन है तो केस चलता रहता है, वैसा है. So this is also one of the loophole. So the correct answer is B, 2 only. Let's move to the 78th question. With reference to the dates issued by the courts of India, consider the following statements. See, this was an easy one. A mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. It is true. आप mandamus को किसी भी private organization के against नहीं use कर सकते हो. Second is mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. No, अगर ये government company है तो उस पर mandamus लागू होगा. तो आंसर B, statement B is wrong. अगर हम statement B को गलत करते तो we'll get an answer that is C, 1 and 3 only. So फिर भी let's read the third statement to be sure. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. This is right. So our answer is 1 and 3 only. ये लक्ष्मीकांत से लिया गया है and आप लक्ष्मीकांत को प्लीज अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's move to the next question. Ayushman Bharat Digital Mission. Consider the following statements. Private and public hospitals must adopt it. See, it is not necessary कि must adopt it. It is a very extreme statement. ऐसे तो private hospitals बहुत छोटे छोटे से भी होते हैं, सब नहीं कर सकते. तो first statement is wrong. अगर हम first statement ही गलत करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है that is B, through elimination method. Still will read. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be a part of it ultimately. This is not a necessity. मतलब जरूरी नहीं है कि every citizen इसका part हो. And third is it has seamless portability across the country. हाँ, ये country में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, portability है. तो only third statement is right. So the answer is B, 3 only. Let's move to the 80th question. It's about Deputy Speaker of Lok Sabha. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held as such date as a speaker may fix. It is a very true statement. It is specifically mentioned in Lakshmikant. And the second statement is there is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. It is a convention. It is not a mandatory provision. So second statement is correct, wrong. So अगर आपका second statement wrong है तो आपका option B and option D eliminate हो जाता है. Let's see the third statement.
The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against its ruling. It's true. अगर आप डिप्टी स्पीकर का चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से तो आपको ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मिलेगा. Fourth one is the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by prime minister. No, this is also wrong. So the option only 1 and 3 are correct. So the answer is A, 1 and 3 only. Let's move to the next question. Climate action tracker, which monitors the emissions reduction pledges of different countries. It's a database created by a coalition of research organization. It was in current affairs. So the answer is A. अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित database. So answer is A only. Climate action tracker. Let's go to the next question. Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. This is true. Second is the International Energy Agency in partnership with the Climate Group launched the global initiative EP100. See, EP100 में International Energy Agency नहीं है, इसमें अलग agencies है, but इसमें International Energy Agency नहीं है. So statement 2 is wrong. And the third is EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goal. This is a true statement. Some Indian companies are members of EP100. This is also true. Fifth one is the International Energy Agency is the secretary to under 2 coalition. No, this is a wrong statement. So this was a tough question. आपको इसके लिए काफी deep knowledge चाहिए. So the answer is B, 1, 3 and 4 only. Option 2 and option 5 are wrong. Let's move to the 83rd question. If rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetlands functions as its kidneys. Which one of the following function of wetlands best reflect the above statement? See, इसमें the main keyword is kidney. Kidney का क्या काम होता है कि वो excess जो भी undesirable elements होते हैं हमारी body के वो absorb करके बाकी चीजों को excrete कर देता है. तो the answer D is correct. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. So kidney का यही function अगर आप उसको relate भी कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाता है. The answer is D. जलीय पादप भारी धातु और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेता है. The same function as kidney does in our body. Let's move to the 84th question. WHO air quality guidelines. इसमें कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं? The 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 UG per M3 and the annual mean of the statement 1 is right. It is in the guidelines. Second is in a year the highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. See, inclement weather is like rainy weather, cold weather. No, it is the highest during the period of sunny weather. The statement 2 is wrong. अगर हम statement 2 eliminate कर दे तो हमारे दो क्वेश्चन eliminate हो जाते हैं. The statement 3 is PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. This is true. And fourth one is excessive ozone in the air can trigger asthma. So the correct answer we get is A, 1, 3 and 4. Let's do the 85th question. Gucci. Gucci was in news and it's a mushroom. It is one of the most expensive mushroom. It is cultivated in J&K and it was in news. Let's see the option here. It is a fungus. Yes, mushrooms are fungus. So the answer is correct. A statement is correct. Second is it's grown at some Himalayan forest area. That is also true. Himalayan areas में होता है. Third is it is a commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. No, it is not cultivated in northeastern India. अभी मैंने बताया it is cultivated in J&K. So the third statement is wrong and the answer is C, 1 and 2. Let's move to the next question. ये polythene terephthalate के बारे में है. Let's see the statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to enforce their properties. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Third one is bottles made of it can be recycled into other products. And fourth one is articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. See, the answer is correct is D. Only 2 and 3 statements are right and first and fourth statement are not right. So the answer is D. Let's move to the next question. इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है? Golden mashir is not a bird. Golden mashir is a fish. And it is also known as the like tiger of the sea, golden mashir. It was in news. So golden mashir आप पहले आप eliminate कर दो तो ये आंसर आ जाएगा वो golden mashir. फिर भी let's see the other option. Indian nightjar is a bird. Spoonbill and white ibis are also birds. So golden mashir is not a bird, it's a fish. So it is our correct answer. Let's move to the next question. Which of the following are nitrogen fixing plants? जितने भी legume plants होते हैं
वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स हियर. अल्फा अल्फा, यस इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स. अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग है कि नहीं. अल्फा अल्फा है. अमरनाथ नहीं है. चिकपी है, चिकपी लेग्यूम क्रॉप है, वो बिल्कुल है. क्लोवर है. ये कुल्फा एंड स्पिनच नहीं है, पालक से कोई लेग्यूम नहीं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता. सो आप अगर 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता है. द आंसर इज ए 1, 3 and 4 ओनली. Let's move on to the 89th question. Biorock technology. It was in news, and the answer is restoration of damaged coral reef. Coral reef को जो भी damage थी वो उनके restoration के लिए Biorock technology was in news. So answer is A. Let's move to the next question. Miyawaki method. The Miyawaki method is also very famous. It is a Japanese method, Miyawaki method, and it is for creation of mini forests in urban areas. In Japan, it is a very famous method of afforestation. तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाते हैं, बहुत ही एकदम कॉम्पैक्ट एरिया में फॉरेस्ट बनाते हैं अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में जगह कम है तो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट होते हैं. तो दिस इज मियावाकी मेथड. अभी दिल्ली में, अभी कुछ यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज हैं इनमें काफी अप्लाई किया गया है. सो इट वाज इन न्यूज. इट मेथड इज अडॉप्टेड फ्रॉम जापान. सो द आंसर इज सी, creation of mini forests in urban areas. This was an easy one. Let's move to the next question. Consider the following. ओके, ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है. ओपन सोर्स होता है कि कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, उसके लिए आपको कोई परमिशन, कोई फी, कुछ नहीं करना है. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट. फर्स्ट इज आरोग्य सेतु. सी आरोग्य सेतु इज ओपन सोर्स. आप कोई भी, आप अपने फोन में जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. कोविन इज ऑल्सो करेक्ट. आप लोगों ने अपनी जो भी आपने वैक्सीनेशन कराया उसका सर्टिफिकेट आपने कोविन से डाउनलोड किया होगा. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स. आपको कोई अलग से पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा. डिजिलॉकर इज ऑल्सो ओपन सोर्स. कोई भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकता है. एंड दीक्षा इज ऑल्सो ओपन सोर्स. So the answer is D, 1, 2, 3 and 4. This was an easy question. Let's go to the 92nd. Web 3.0. Web 3.0 technology enables people to control their own data. It's true. Web 3.0 technology was in news and it was covered in many current affairs magazine also. तो इसमें ये enable करता है people को अपना data control करने का. Second is there can be blockchain based social networks. It is also true. See, I'll also tell you one trick. जहाँ पे ये can be, might be, could be वैसे वाला option आता है ना, so ये maximum सही होता है. I'm not telling 100%, but 80% of these guesses like can be, might be or could be, ये answer आपके correct होते हैं. Third is Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. It is also true. So the statement is D, 1, 2 and 3. Let's go to the next question. It is a reference to software as a service. Let's see the option. Software as a service, buyers can customize the user interface and can change the data fields. See, right, अभी मैंने आपको बताया can वाले जो options होते हैं वो maximum सही होता है. So this one is right. First statement is right अगर आपने पढ़ा भी है तो. And it is second statement is users can access their data through their mobile devices. बिल्कुल हम लोग अपने सारे मोबाइल डिवाइसेस पे ये डाटा एक्सेस कर सकते हैं. थर्ड इज आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ये भी सही है. तो स्टेटमेंट इज डी इज आवर आंसर, 1, 2 and 3. Let's move to the next question. It is regarding fractional orbital bombardment system. So अगर आपने ये पढ़ा है तभी होगा, इसमें आपका कोई गेस वर्क काम नहीं करेगा. So the correct answer is it's a missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. So the correct answer is C. अगर आपने पढ़ा है तभी आपको आएगा. ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है इसकी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम की. So the correct answer is C. Let's go to the next question, 95th. Qubit. Qubit आप बहुत बार आपने सुना भी होगा. It's a quantum computing thing. So quantum computing में ये qubit term use होता है. So this was also easy one. The answer is B, quantum computing. Cloud services में नहीं होता. Visible light communication technology में बिल्कुल नहीं होता. And there is no qubit thing in wireless communication technology. So this was an easy guess. That is B, quantum computing. Last 5 questions are left. And let's see. Consider the following communication technologies: closed circuit television, radio frequency identification, and wireless local area network. Okay, let's see what is asked in the question.
विच वन ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी? शॉर्ट रेंज में तीनों ही आती है, ये अगर आप लूसेंट भी पढ़ेंगे, वो भी करंट अफेयर्स के आप पढ़ेंगे तो ये पूरा साइंस एंड टेक में है। ये तीनों शॉर्ट रेंज डिवाइसेस ही हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी। सो द आंसर इज डी, 1, 2 and 3. Let's move to the 97th question. Biofilms. Biofilms can form on medical implants within human tissue. See, अभी मैंने आपको बताया कैन वाला, might be, could be, can be, वो ज्यादातर ना सही होते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपका गेस वर्क यहाँ पे काफी प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही होगा। Let's see the options. Biofilms can form on medical implants within human tissues. This is true. Second is biofilms can form on food and food processing surfaces. This is also true. Third one is biofilms can exhibit antibiotic resistance. ये भी सही है, तो answer is D, 1, 2 and 3. Let's move to the 98th. It is regarding probiotics. Let's read the question, statement, sorry. Probiotics are made of both bacteria and yeast. Yes, they are made both of bacteria and yeast. It is true. Second is the organism in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in the gut. No, this statement is wrong. हमारे gut में तो सबसे ज्यादा probiotics होता है, अगर वहाँ पे कुछ कमी आती है तो हम ऊपर से probiotics लेते हैं। So the second statement is wrong. Third is probiotics help in the digestion of milk and sugars. Yes, statement third is also correct. It is from Lucent or any basic science and technology book. So the answer is C, 1 and 3. Let's go to the 99th question. It's COVID-19 pandemic के regarding है, vaccine जो बनी थी। तो answer first is the Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Yes. Second is Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. Yes. And third is Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. See, all the statements are correct. ये आपको अगर आपने पढ़ा है वैक्सीन्स के बारे में और ये जितने भी वेक्टर बेस्ड थे, मतलब वीक वैक्सीन, स्ट्रॉन्ग वैक्सीन, जितने भी mRNA, DNA, सबका ये आपने पढ़ा हो तभी आपका आंसर आएगा ये। But it was in news, so you should have read it. Let's see the next last question of our discussion. If a major solar storm or solar flare reaches the earth, which one of the following are the possible effect of the earth? Solar storm जो है, सौर तूफान अगर पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं? Let's see. GPS and navigation system could fail. Yes, it could fail. Second is tree tsunamis could occur at equatorial regions. No, खाली मतलब equatorial ये आपका सेंस नहीं बनता है कि equatorial regions पे टी सुनामी मतलब सुनामी क्यों आएगी और पूरे उस पे क्यों नहीं आएगी या सुनामी क्यों आएगी? तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग आउट ऑफ करंट ऑफ कॉमन सेंस ओनली। तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट ही आप एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर आ जाता है, दैट इज सी। स्टिल वी विल सी द रिमेनिंग ऑप्शंस। थर्ड इज पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड. यस, they could be damaged. Fourth is intense auroras could occur over much of the earth. Yes. Forest fire could take place over much of the planet. See, the catch here is much of the planet. Much of the planet तो बहुत ज्यादा हो जाता है। much of the planet तो सारे ocean भी आ जाएगा, सारे water bodies भी आ जाएगा, तो वहां तो forest fire नहीं लग सकता। So this statement is wrong. यहाँ पे इसलिए आपको ना अपना पूरा मतलब all of the always senses should be open while attempting the paper. Fifth statement is wrong. Sixth is orbits of the satellites could be disturbed. बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। And the last one is shortwave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. Yes, it could be interrupted. So the answer is C, 1, 3, 4, 6 and 7 only. गाइज ये अभी हमारा खत्म हो रहा है डिस्कशन। आई होप आपने अच्छे से सुना हो। प्लीज अपने आंसर की से मैच कीजिएगा, आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। आई होप सो एंड आई विश you all the very very best and all the very very best from Aakar Foundation. Thank you guys, thank you for having me this evening.